morning, friends. I'm Sarabjit Singh Puri, and this is another session for Rural Market Strategies channel. But today we have an expert who has worked in almost every segment of rural market, be it pesticides, be it fertilizers, specialty fertilizers, and even in micro irrigation. So today he's a micro irrigation expert. He is Mr. Kaushal Jaiswal. He is MD of Rivulis India Private Limited, which is a 100% owned subsidiary of Rivulis Israel. So, Kaushal Saab, you are welcome to this channel, and thank you for accepting our. We are honored that you have accepted our invite on this channel because this is going to be a very important knowledge sharing session with the peers, industry peers, as well as juniors, as well as the new students and the coming up generations, because you have that kind of experience which should be shared with the people. Good morning and good morning, Sarabjit ji, and all the audiences. And thank you for your introduction and thanks for having me here. I am delighted. Thank you, sir. So Thank you. first question here goes with you is I would like to know a bit more about you so that people can understand more about you and know more you. So the journey started maybe almost 40 years ago when I decided to join agriculture in 1983, because that's the point when this entire journey started. And then my professional career started in 1988 when I joined a company, Rallis India Ltd, from the campus interview itself from my university, alma mater, Pantnagar University. And I worked in Rallis for initial 3-4 years. Then I joined the company called Chambal Fertilizers in 1991. Worked there in the state of Punjab during the peak of terrorism in Punjab, and un- understood the rural part of the Punjab, particularly uh, an understanding of the farming in Punjab. At that point of time, the Punjab was considered to be very, very, uh, say, advanced farming techniques and advanced farmers. So, got an opportunity to work with them very, very closely. And then I moved back to Rallis India when the Tata Chemical plant was being commissioned in 1994. And the Rallis was the sole marketeer of the Tata Chemicals at that point of time. So I worked with Rallis, particularly where I was in charge of the urea marketing of Tata Chemicals plant of Babrala unit. And then we entered into, at that point of time, into the rural retail. So that was a hub and spoke model of Tata Kisan Sansar, which used to call it Tata Kisan Kendra at that point of time. Later on, it was named as TKS. So we opened up maybe around 150 such retail stores, which were the exclusive retail store. So I had an experience of working and opening of the uh, Agri retail, and the concept was all product and services under one roof. And in 2001, I moved to a company called FMC, which is one of the largest crop protection company, and worked there for 11 years till 2012, and worked there in the different capacities of in the sales and the marketing and the alliance management. And 2012, I joined a joint venture company of Zuari Group and Israel Chemicals, which was Zuari Rotem specialty fertilizers. We used to manufacture water soluble fertilizers. Worked there, and then we merged this company and formed a new company called Zuari Agri Sciences, which was a merger of Zuari Seeds, crop specialty fertilizer business, and the crop protection business. And in 2016, uh, I got an opportunity to join Rivulis in the micro irrigation sector. So since 2016, I'm working with the in the micro irrigation sector. That's how the journey is. Great, sir. Great. Very fantastic journey. So I would like to ask now we'll deep dive down into micro irrigation.
So, as micro irrigation is a niche industry, how does your company approach marketing to reach your target audience effectively? So, because You the are market is different as far as micro irrigation is concerned in comparison to what you have done earlier in pesticides, seeds, or fertilizers. Since at the end of the day, the customer is the same. Right. He is the same farmer who is using seeds, who is using fertilizers, who is using crop protection chemicals, who is using farm mechanization part of that, whether the tractor or the agri implements, and the same farmer is uh, say graduating towards better technologies, and the micro irrigation is one of them. Number one. So the customer, there is no change in customer. The customer is the same, right? And yes, to approach the customer, to educate about the product, we have a strategy which is digital as well as physical, both ways. And our strategy is very, very clear. We have a program called Growers Intimacy Program, where we really want to go to the growers, talk to them, educate them digitally as well as physically, right? I'm quite focusing on world digitally and physically both, because digitally you can go and approach, but it's most of the time it's a one-sided communication. And when you really want to understand the farmer, you need to go and grow that intimacy physically, understand his requirement, try and understand, then provide him a best possible economic solution. It can, there can be a better solution, but it has to be economically viable for a farmer to adopt it. So that's where we grow, and we conduct lot of on a different platforms, lot of crop seminars. And last year, if you I recall, I think my team has conducted more than 60 crop seminars in different languages, because it's very, very important to understand, to communicate with the farmer in his own local vernacular language. India is a multilingual country. India is a very diversified culturally, linguistically, as well as agroclimatically. So one shoe doesn't fit all. Let's understand it very clearly. So to, if you really want to go and grow the intimacy with your customers, farmers, you need to talk to him in the language which he understands. So we have developed our crop brochures, our product brochures, all our communications almost in 6 or 7 languages, which is Tamil, Kannada, Telugu, Marathi, Gujarati, Hindi, and sometime in Bangla also, so that he understands what are we talking about. And for international audience, or for academicians, for students, for the industry, the same communication is in English as well. So that's how we are approaching to the farmer, so to make him understand the importance and requirement. Why somebody can ask, why do I need micro irrigation? So you need to explain it to him, the actually need of micro irrigation. He might not have felt that need till today, but somebody will have to go and explain it, and when he understands that, the adoption becomes very, very easy. And number two part, micro irrigation is not selling the product, it's more of the services. If you are able to sell the product and do the installation of micro irrigator, it need to be serviced quite often. So their initial stages, you need a hand holding of the farmer, and that's where we are focusing on. Our after sales and technical services team is very, very strong, maybe one of the strongest in the industry. Those who Oh. take care of the farmer after the sales happens. So sir, there is one more point I want to ask. Maybe I can ask it in Hindi कि जो हम क्योंकि ये थोड़ा फार्मर से रिलेटेड भी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन में चीज थोड़ी महंगी रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका थोड़ा महंगा रहता है फार्मर के लिए, पैसा लगाना उसे पड़ता है, एक्सपेंसिव है, पूरे खेत में हर जगह पे पाइप्स बिछानी पड़ती हैं और वो काफी एक्सपेंसिव भी हो जाता है। हालांकि
गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। पर मेरा पॉइंट, सवाल थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे ये है कि माइक्रो इरिगेशन में आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि पानी ही बचता है, कि सिर्फ पानी बचाने के लिए ही माइक्रो इरिगेशन की जाती है। क्या ये सिर्फ पानी बचाने के लिए की जाती है या इसके और भी बहुत सारे फायदे? सिंह साहब, पानी भी बचता है। अगर आप इसको इस सेंटेंस को इस तरीके से करें तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। पानी ही नहीं बचता है, पानी भी बचता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि माइक्रो इरिगेशन, यस, पहले फर्स्ट नीड वाज कि पानी अगर कम है तो लोगों ने माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करना शुरू किया। और लेकिन ये जो मिसकंसेप्ट है कि पानी की जरूरत नहीं है माइक्रो इरिगेशन के लिए, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इरिगेशन के लिए पानी तो चाहिए, पहली चीज वाटर सोर्स चाहिए, पानी चाहिए। और ये इरिगेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें प्रेशर भी चाहिए, प्रेशराइज नेटवर्क होता है। बिना प्रेशराइज नेटवर्क के, बिना 2 kg या 3 kg प्रेशर के खेत के आखिरी कोने तक पानी पहुंचता नहीं। तो पानी भी बचता है। मैं लेकिन इसको एक्सप्लेन बाद में करता हूं। उसके दूसरे एडवांटेजेस आप अगर आप समझने की कोशिश करें, तो बेसिक फंडामेंटल माइक्रो इरिगेशन का है वो ये है कि इरिगेट द क्रॉप, डोंट इरिगेट द फील्ड। तो पूरे खेत में पानी की जरूरत नहीं है जो कि फ्लड इरिगेशन में होती है। तो आप क्या करते हैं, आपका जो ड्रिप लाइंस है वो एक्चुअली उस स्पेसिंग के ऊपर होते हैं जहां पे क्रॉप होती है, और वो सिर्फ क्रॉप को ही पानी देते हैं। जब वो क्रॉप को पानी देते हैं तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर शुरू होती है कि जितना पानी चाहिए, जितनी प्यास लगी उतना ही पानी आपको देना है। और जब आपकी बाकी की फील्ड ड्राई है तो आपके जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, उनका प्रेशर नहीं होता, वो कम उगते हैं। जब वीड्स कम उगते हैं तो वीडिंग के लिए, वेदर आप मैनुअल वीडिंग यूज कर रहे हैं या हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, उनका उनकी जो सेविंग है वो अलग होती है। क्योंकि आपको कम हर्बिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते, आपको मैनुअल वीडिंग नहीं करनी पड़ती। और वीड क्रॉप प्रेशर जो कंपटीशन होता है वो भी नहीं होता। जब वीड्स फील्ड में नहीं होते तो जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो एक्चुअली उस क्रॉप को मिल रहा है जिसके लिए वो बना था। अब अगर आप फर्टिलाइजर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर आपने लगाया है और आप फर्टिलाइजर फर्टिगेशन टेक्निक से दे रहे हैं अलोंग विद द ड्रिप लाइन, तो आपकी जो न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी है वो कई गुना बढ़ जाती है। होता क्या है, जब आप फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से देते हैं और फ्लड इरिगेशन करते हैं तो बहुत सा फर्टिलाइजर लीच डाउन होकर नीचे चला जाता है, या वोलेटिलिटी में, इवापोरेशन में, हवा में उड़ जाता है। एक्चुअली जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी क्रॉप को मिलती है वो शायद 40 से 50% मिलती है। लेकिन जब आप ये फर्टिगेशन टेक्निक यूज करते हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, या फॉर एग्जांपल यूरिया यूज करते हैं विच इज द हाईएस्ट वाटर सोल्यूबल इन नेचर, सो आपकी जो न्यूट्रिशन यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ के करीब 95-97% हो जाती है। यानी जितना फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं उतना प्लांट इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस खेत में आप यूरिया की 1 बोरी इस्तेमाल करते थे, अगर आप फर्टिगेशन के थ्रू इस्तेमाल करेंगे तो शायद आधी बोरी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपका क्रॉप को उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा जितना 1 बोरी ब्रॉडकास्टिंग में मिलता था। एडवांटेजेस क्या है? आपने फर्टिलाइजर में सेव किया, आपने लेबर में सेव किया, आपने वाटर टेबल पॉल्यूट नहीं हुई आपका सॉइल हेल्थ इंप्रूव हुआ, आपने वीड्स को फर्टिलाइजर्स नहीं प्रोवाइड किया तो वीड पॉपुलेशन कम रही, एंड अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि आपकी हेल्दी क्रॉप हुई, आपकी क्रॉप यील्ड बढ़ी, आपकी क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो बहुत अच्छा हुआ। तो और उसके बाद आप अगर वैसे देखें, अगर आपको इरिगेशन के लिए बिजली का इस्तेमाल करना है, पंप चलाना है या डीजल इस्तेमाल करना है, तो अगर आपको फ्लडिंग के लिए 4 घंटे लगते हैं पंपिंग के लिए, तो वो काम आधे टाइम में और आधे पानी में और आधी इलेक्ट्रिसिटी में माइक्रो इरिगेशन के थ्रू हो जाता है। और दूसरा एडवांटेज ये कि इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। ओके। तो बहुत ढेर सारे एडवांटेजेस हैं और प्रूवन पेपर्स हैं इसके ऊपर, जो कि आपको ये बोलते हैं कि आपके 30 से 35% की सेविंग होती है और बाकी यील्ड इंक्रीज होती है। तो आपका जो अल्टीमेट इकोनॉमिक्स है वो बहुत बड़ा बेनिफिशियल है।
सर इसमें एक चीज और बताइए कि जैसे माइक्रो इरिगेशन एक पार्ट हो गया, और उसके साथ साथ कुछ और सर्विसेज भी आप लेकर आए हैं या और कंपनीज दे रही हैं, आपकी इंडस्ट्री दे रही है, जिससे कि फार्मर जो है, जो एडवांस फार्मर है, जो थॉट प्रोसेस ये रखता है कि मुझे बेनिफिट लेना है या प्रिसीजन एग्रीकल्चर में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जिसमें कुछ सेंसर्स की टेक्नोलॉजी हो या एग्रो मशीनरी के साथ कनेक्टिविटी की कोई टेक्नोलॉजी हो, या इस तरह की कोई और चीज आप लेके आ रहे हैं? हमारी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, दिस इज कॉल्ड माना इरिगेशन इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, राइट। पूरे दुनिया में इरिगेशन से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स हैं। चौथी प्रॉब्लम बहुत कम होती है। पहली प्रॉब्लम है हाउ टू इरिगेट, दूसरी प्रॉब्लम है हाउ मच टू इरिगेट, राइट। एंड तीसरी प्रॉब्लम है व्हेन टू इरिगेट। कैसे सिंचाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है और कब सिंचाई करनी है, राइट। राइट। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम पूरी दुनिया के किसानों की सिंचाई से रिलेटेड नहीं है। अब कैसे करनी है इसका सॉल्यूशन फार्मर ने ढूंढ लिया कि जिसके पास, किसी को फ्लड में करनी है, किसी को फरो में करनी है, किसी को स्प्रिंकलर के थ्रू करनी है, किसी को ड्रिप के थ्रू करनी है, वो फार्मर ने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। कब करनी है और कितनी करनी है इसका कोई साइंटिफिक मेथड फार्मर कम्युनिटी के पास था नहीं। वो एक्सपीरियंस से ही करता था या गट फील से करता था कि हाँ जी खेत सूखा दिख रहा है, अभी इतने दिन हो गए जी, सिंचाई कर देनी चाहिए। उसको ये भी नहीं पता होता था कि नेक्स्ट डे का वेदर फोरकास्ट क्या है। आज सिंचाई करी, कल बारिश भी हो गई, तो वो सिंचाई भी वेस्ट है, ठीक है। सो और लॉस भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। एंड जनरल टेंडेंसी क्या थी? टेंडेंसी इज टू ओवर इरिगेट, नॉट टू अंडर इरिगेट। कि ठीक है जी, पानी लग रहा है तो लगने दे अभी। अब हम जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं माना इरिगेशन सॉफ्टवेयर, ये 2 समस्याओं का हल देता है फार्मर को कि कब करनी है और कितनी करनी है। और ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा काम किया है। ये रिमोट सेंसिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी सेंसर फील्ड के ऊपर नहीं है, पहली चीज। सो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द रिमोट सेंसिंग वी डू measure 2-3 things. We measure ETO, which is called evapotranspiration. We measure crop इसमें moisture. पहले आप जो एरिया है उसको आप पूरी तरह से फिक्स कर लेते हैं लैंड को। हाँ, वो जियो फिक्स करते हैं, जियो टारगेट करते हैं। आपको जियो टैग करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत आसान सा काम है। आपको हमें 4 जो फेंस हैं वो जियो मैप के थ्रू या आपको गूगल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वेयर यू कैन मैप योर फील्ड एंड अपलोड दैट पिक्चर सो दैट वी कैन सेंस दैट कि इस फील्ड के लिए आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए। हम फार्मर से कुछ चीजें मांगते हैं, हम बताते हैं आपको कि क्या क्या मांगते हैं हम फार्मर से। तो हम पहले क्या करते हैं, हम उस फील्ड का ट्रैकिंग करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, राइट। सो वी मेजर 3 थिंग्स: evapotranspiration, plant moisture content, and then we merge it with the hyper local weather forecast. Okay. उस एरिया का वेदर फोरकास्ट क्या है अगले कुछ दिनों का। एंड देन देयर इज अ केसी टेबल विच इज कॉल्ड क्रॉप कोफिशिएंट टेबल, which gives you a peak water requirement of that crop at that particular growth stage. Then there is an algorithm at the back end, artificial intelligence takes it over आपका and gives you actual water requirement of that field on of that crop for next 1 week time, right? और जो भी इरिगेशन शेड्यूलिंग है उसका हम डेली बेसिस पे भी दे सकते हैं इसको कि इतनी क्रॉप रिक्वायरमेंट। अब फार्मर को मिलीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब समझ में नहीं आता, राइट। उसको ये पता नहीं यार सेंटीमीटर क्यूब कैसे नापूंगा कि इतने सेंटीमीटर क्यूब या इतने मिलीमीटर क्यूब पानी डाल दो। तो हम फार्मर से क्या बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम ये पूछते हैं कि आपकी क्रॉप कौन सी है, इसकी डेट ऑफ सोइंग क्यों है, क्योंकि वो हमको मेजर करना है कि ग्रोथ स्टेज क्या है उसकी। अगर सॉइल टाइप बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो भी कोई खास बात नहीं है। एंड देन आपका जो वाटर पंप है उसका डिस्चार्ज क्या है,
आप जब पंपिंग करोगे तो उस वाटर पंप का डिस्चार्ज क्या है, कितना पानी जाएगा। उसके बाद हमें को पता है कि अगर ये फ्लड इरिगेशन है तो इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है, अगर ड्रिप इरिगेशन है तो इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है, दैट गेट्स कैलकुलेटेड। और फिर हम फार्मर को बोलते हैं कि आपको अपना पंप जो है वो 1 घंटा चलाना है, 2 घंटा चलाना है, 3 घंटा चलाना है, क्योंकि हमने You give the डिस्चार्ज timing instead of giving the cubic millimeter or centimeter. हम दोनों चीजें देते हैं। अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन क्लिक इट ऑन कि आपको डिस्चार्ज कितना है, 2 घंटे चलाना है पंप, ठीक है चला दिया जी 2 घंटे, दैट्स फाइन एनफ। बिल्कुल। और ये हम मेजर करके बताते हैं कि हमें हमें ये पता है कि वेपर प्रेशर डेफिसिट कितना है, पानी कितना बरसने वाला है, नहीं बरसने वाला है। उसके या बाद गर्मी कितनी है, राइट, धूप हाँ, कितनी गर्मी है, कितनी, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कितनी है, कितना राइट। है, ईटीओ कितना होगा आपका, वाटर लॉस कितना होगा क्रॉप से, और क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। ये ऑन ए क्लिक ऑफ अ बटन ऑन ए मोबाइल फोन फार्मर को जाता है। पहले हमने इसका ऐप डेवलप कर रखा था, अभी हमने ऐप भी हटा दिया। अभी हम ये पुश रिपोर्ट जाती है ऑन ए व्हाट्सएप। अगर किसी भी फार्मर के पास स्मार्टफोन है और उसको व्हाट्सएप चलाना जाता है तो उसके पास उसके फील्ड की सैटेलाइट इमेजरी, आपका वेजिटेशन का मैप एज वेल एज मॉइस्चर मैप दोनों जाते हैं, और उसके साथ उसकी रिकमेंडेशन जाती है कि आपको अपने खेत में इतना पानी डालना है या नहीं डालना है, दोनों। अगर हम ये बोल रहे हैं कि आपके 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी, मत डालो, एक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दैट्स हाउ वी ऑप्टिमाइज इट। सो इन अ वे दिस इज अ वेरी, एक और सवाल था इसी से रिलेटेड कौशल साहब की, इसमें जैसे आपने बोला ये माना टेक्नोलॉजी जो आपने नई लेके आई है, क्या ये आप उन्हीं फार्मर को देते हो जो आपके माइक्रो इरिगेशन के कस्टमर्स हैं, या आप किसी को भी दे सकते हो? हम किसी को भी दे सकते हैं, ये तो पेड बेस्ड सब्सक्रिप्शन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ओके, अच्छा, इसका मतलब उस सर्विस से लेना देना नहीं है, जिसको लेना है वो ले ले। जिसको लेना है वो ले ले। अच्छा, अगर वो हमारा कस्टमर है तो उसको शायद नॉलेज पहले से होती है, अगर बाहर वाला कस्टमर है तो हम उसको भी दे देते हैं। हाँ, इसमें क्रॉप जरूर स्पेसिफाइड है कि हर क्रॉप का केसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो आज की तारीख में इंडिया में हम करीब 35 क्रॉप्स पे दे रहे हैं और धीरे धीरे क्रॉप्स ऐड कर रहे हैं। जब हमने इंडिया में लॉन्च की थी 2018 में, तब शायद 4 ही क्रॉप्स थी। आज हमने वो बढ़ा बढ़ा के 35 क्रॉप कर दी, तो मोस्टली क्रॉप्स कवर्ड है। वेरी गुड सर। अभी एक दो सवाल मैं थोड़ा मार्केटिंग साइड के पूछता हूँ, क्योंकि अब आपने टेक्निकल काफी ज्यादा कर दिया, हो सकता है कई लोग थोड़े से टेक्निकल साइड में। इसमें सवाल ये है सर कि आज की डेट में फार्मर भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज भी बदल रही हैं, आप भी नई टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, रिमोट सेंसिंग, ये सब पे आ रहे हैं, और नए जो बच्चे, नए फार्मर्स पढ़े लिखे भी आ रहे हैं, और वो डिजिटली, मैं कहूँगा डिजिटली बहुत ज्यादा अवेयर भी हैं और बहुत ज्यादा एजुकेटेड भी हैं और बहुत अच्छे से वो जानते भी हैं। तो आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज में एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मार्केटिंग की बात करूं या फिर एजुकेशन की बात करूं, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड, उसको किस तरह से आप यूज कर रहे हैं और कहां तक आप उसमें सफल हुए हैं, और क्या टेक्निक्स उसमें आप सजेस्ट करेंगे नए यंगस्टर्स को कि वो फॉलो करें? दो चीजें, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए तो यूज की जा सकती है, राइट। कैस्केडिंग इफेक्ट उसका हो सकता है डाउन द लाइन, इंफॉर्मेशन आपको अगर पास ऑन करनी हो एंड मास एप्लीकेशन करना हो तो इट इज अ वेरी वेरी यूजफुल, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एग्रीकल्चर और खेती फिजिकली ही होने वाली है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको खेत में जाना ही पड़ेगा, राइट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डिजिटली आपको सोइंग करनी ही पड़ेगी, राइट। आपको प्लोइंग करनी ही पड़ेगी, आपको फील्ड प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, आपको हार्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी, राइट। आपको अगर ड्रोन एप्लीकेशन भी करना है तो ड्रोन उड़ा के एप्लीकेशन करना पड़ेगा, वो फिजिकली वहां जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, राइट। आप उसको डिजिटली कंट्रोल कर सकते हो, आई एम ओके विद दैट। someone can digitally control it, but something will have to be physically present into the field to do the agriculture. So dissemination of the knowledge, technology, the digital media has given us a lot of leeway जो हमारे टाइम में अवेलेबल नहीं था। फिजिकली लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था, लिमिटेशन था।
Right now, in the digital world, you develop any content, upload on the social media, on YouTube, on develop Facebook, an app, LinkedIn, wherever, right? wherever you want to do that. Your own portal, develop your own portal, develop your own websites, and maybe if you have developed an app, you can upload into the Google or iOS so the people can download it. You can do it in the different languages. Sometimes you need not to do the different languages. Google translates it itself. So that advantage has happened, and we are using this to an extent possible. Rivulis has a very good website. Number one, lot of content is available on the Rivulis website about micro irrigation, about the crops, agronomy, about the crop protection. So people, those who are interested in that, they can go to the website and it's a downloadable thing easily. And then for the Indian context, we have developed a Rivulis product brochure, which is available on Google Play. So you can download it from the Google Play and see that and understand it. We have developed a maintenance manual. What happens when we are selling a product? So in each and every Rivulis product, there is a QR code. There are two QR codes. You can scan it, QR code. You can download the maintenance manual in your own language. It gives you the option Hindi, English, Gujarati, Marathi, Kannada, Telugu, Tamil. सो आप अपने भाषा में उसको डाउनलोड कर लीजिए सो दैट मेंटेनेंस मैनुअल का आपका फिजिकल कागज संभाल के रखने की जरूरत नहीं। राइट। सी आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपके पास वो मैनुअल आ गया, आपके पास दूसरा क्यूआर कोड है which we called is a real view, which we call it your eye in the sky, राइट। सो आपने वो डाउनलोड किया, जैसे ही आपने अपना फील्ड में माइक्रो इरिगेशन इंस्टॉलेशन किया, it will start giving you the pictures of your field on your mobile so that you can start monitoring remotely your field. हाँ, उसके बाद उसको ठीक करने जाना, फील्ड में जाना पड़ेगा, लेकिन रिमोट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं अगर पुणे में बैठा हूँ और मेरा फील्ड कहीं बेलगाम में या बैंगलोर के पास है, तो आई कैन मॉनिटर माय फील्ड सिटिंग हियर कि अच्छा ये एरिया ड्राई दिख रहा है, ये एरिया वेट दिख रहा है, यहाँ पे वेजिटेशन अच्छी दिख रही है, यहाँ पे वेजिटेशन कम, एंड आई कैन गेट a weather information also on that. So we are using the digital media to an extent where we can approach to reduce the human labor in a way, to reduce the human labor to some extent and improve our knowledge efficiency or information efficiency. And after that we have a full-fledged call center which is available in the 4 or 5 Indian languages. So we have a toll-free number. Any farmer can call that call center and get the information, and if the information is not available at the call center employee, that is passed on to the expert, and then they contact the farmers and understand and provide them the solution. So we are using it digitally, physically, is a mix of both. Yes. Great, sir. This is fantastic. Now I will ask you a bit tougher question. So tougher question in a way which is related to our Indian फार्मर्स रिक्वायरमेंट। तो इसमें सवाल ये है कि जैसे हमारी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं या जो जिनको ऐसे लगता है कि हमारे पास पानी बहुत है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, नॉर्दर्न राजस्थान हो गया, और स्पेसिफिकली पंजाब हो गया, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं तो मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि पंजाब में क्या हो रहा है कि फ्लड इरिगेशन बड़े आराम से बहुत ज्यादा यूज हो रही है। हालांकि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि हम पानी अपना खत्म कर रहे हैं और आने वाले बच्चों को पानी मिलेगा नहीं। तो इस केस में माइक्रो इरिगेशन कंपनीज का और आप जैसे वेटरन लोगों का बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि आपने भी करियर अपना पंजाब से शुरू किया है, तो आपने दुनिया देखी है, वो आप समझते हो पंजाब की उसको। तो पॉइंट ये है कि ये पंजाब के फार्मर को आपकी इंडस्ट्री ने अगर माइक्रो इरिगेशन की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए आप क्या समझते हो कि क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट का रोल हो या आपका रोल हो या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री का भी रोल हो या वीडिसाइड इंडस्ट्री का भी रोल हो, तो क्या आपको लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि हम फार्मर को भी बचाएं और अपने देश को भी बचाएं? पहले ना अपने से शुरू करते हैं, माइक्रो इरिगेशन इंडस्ट्री से, फिर दूसरों की तरफ जाते हैं। इट्स नॉट, ये पंजाब की प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब।
अगर आप ग्लोबल माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन का एडॉप्शन देखें, अभी फिर इंडिया में आते हैं, फिर पंजाब में आते हैं, टोटल इरिगेटेड एरिया का 7%, 7% इज ओनली थ्रू ड्रिप, 72% is through flood. Oh, Global. I am talking global. about the developed nation, developing nation, all nations put together. And balance is in sprinkler and other ways of irrigation, right? 72 is only flood irrigation. 72% is the flood irrigation, and drip irrigation is only 7%. 7%. 21% is the sprinkler. This is the global statistics, right? Now come to India. Out of 143 million hectares of the arable cultivable area where we do the cultivation, almost 70 to 73 million hectares is a irrigated land. Okay. You cannot do the micro irrigation in the rain-fed area where the water source is not there. So the total potential lies is the irrigated area of the micro irrigation, number one. So it is around 72 million hectares. Out of 72 million hectares, maybe around 15-16 million hectares is micro irrigated. Okay. Still, it is a good percentage, I would say. Out of that 15-16 million hectares, India has the largest micro irrigated area globally. So, and it's the largest market globally. So let's not undermine ourselves. We are doing fantastically well, but it can be improved. And we should feel proud of it at least. For the yeah, but there is a lot of scope also. Yes, we can do much better. But and out of that 15-16 million hectares, which is micro irrigated, half of it is a sprinkler, portable sprinkler system, and half of it is a drip irrigation. So around 8 million hectares, 7.5 to 8 million hectares is a drip irrigation, which is around. So this is where it is as of now. Why the adoption is not happening at the pace at which it should have happened with so many advantages? पहला सवाल, हर आदमी कहता है इतने एडवांटेजेस हैं फिर भी लोग नहीं ले रहे, ऐसा क्या है? बिल्कुल सही, वही पूछ रहा हूं मैं आपसे भी, क्यों आप लोग मना नहीं पा रहे हो फार्मर को? नहीं बता, दो या तीन बेसिक इश्यूज हैं. पहला, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द इरिगेशन सिस्टम इज हाई. आप ये मान के चलिए कि करीब 1,20,000 से 1,30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक हेक्टेयर का खर्चा है एक इरिगेशन सिस्टम को लगाने के लिए, which is a big amount for any farmer. Right. $2,000 is a big amount for any farmer globally also. It's not right. that, yeah, right. It's on in India. It's a $2,000 per hectare almost. Try and understand. तो पहली इनिशियल प्रॉब्लम है इनिशियल कॉस्ट. आपको सब कुछ अच्छा है लेकिन जेब में पैसे होने चाहिए ना यार उसको अडॉप्ट करने के लिए. बेसिक कैपिटल ज्यादा है. हाँ, कैपिटल इंटेंसिव है. हाँ, कैपिटल इंटेंसिव है. दूसरा प्रॉब्लम वो ये है कॉम्प्लेक्सिटी. एक चीज है, आप खरीद के ले आए, आपने ट्रैक्टर लाया, आपने चलाना शुरू कर दिया, आपने कार खरीदी, आपने चलानी शुरू कर दी, मोबाइल खरीदा, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. यहां आप खरीदोगे वो तो ठीक है, लेकिन आपको कोई आदमी चाहिए जो पहले तो आपके सिस्टम की डिजाइनिंग करे पूरे फील्ड की. वो इट्स नॉट दैट कि वन सिस्टम फिट्स इन एवरीवेयर. सो इट नीड्स अ कंप्लीट हाइड्रोलिक डिजाइन. इट नीड्स expert advice which kind of filtration to be used. It needs the slopes and all contours, how to lay out the system. Then somebody will have to come and do the drying and laying out the system. The farmer cannot do himself. Right. Initially. Right. तो वो plug and play system नहीं है. Particularly drip irrigation, right? I'm not talking about the portable sprinkler. So जब plug and play नहीं है तो या तो वो एक्सपर्टीज अवेलेबल हो नेक्स्ट डोर टू द फार्मर, वो इकोसिस्टम अवेलेबल हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो कि वो किसी शॉप पे जाए, उसको बोले कि सर ऐसा है कि ये मेरा फील्ड है, एक बंदा भेजो मेरे को ये लगाना, ये क्रॉप है. वो गया, उसने डिजाइन किया, भेज दिया. तो पहली चीज तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है सब जगह, वो इकोसिस्टम अवेलेबल नहीं है, उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा.
और तीसरी चीज, जहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, इनिशियल कॉस्ट की जो बात है उसकी फंडिंग, राइट, हु विल डू द फंडिंग? फार्मर कैन अडॉप्ट, लेकिन उसको लो कॉस्ट फंडिंग, इजी फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें आप ईएमआई नहीं बना सकते, इक्वेटेड मंथली अच्छा, इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकती। फार्मर के पास पैसे तभी आएंगे जब वो क्रॉप हार्वेस्ट बेचेगा। करेगा और बेचेगा। तो इट हैज टू बी लिंक्ड विद द क्रॉप साइकिल, राइट? अगर आपको लो कॉस्ट फंडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल शुगर केन फार्मर, उसके पास पैसे या तो 1 साल बाद आएगा या 1.5 साल बाद आएगा। इन राइट, महाराष्ट्र 1 साल बाद आएगा, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में 1 साल बाद आएगा। राइट, तो अगर आपने उसको फंड कर भी दिया तो 1 साल के बाद ही इंस्टॉलमेंट आनी शुरू होंगी ना आपकी। बिल्कुल ठीक सर। तो वो जो ईज ऑफ फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए फार्मर को, वो नहीं है। हम्म। सर एक बात मोर बताइए, यहाँ पे मैं फंडिंग थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जैसे ट्रैक्टर लोग खरीदते हैं तो ट्रैक्टर में तो ईएमआई बेस्ड ही फंडिंग चलती है, तो इसमें क्यों नहीं चल सकती? देखिए, ट्रैक्टर खरीदते हैं तो ट्रैक्टर में ना एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी ट्रैक्टर हाइपोथिकेट हो जाता है। राइट, राइट। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में आप क्या हाइपोथिकेट करोगे? वो पाइप बिछ गया फील्ड में तो काम कर नहीं रहा। हाँ, उसके तो वापस नहीं hypothecate- जाएगा कहीं। तो उसको तो उखाड़ने के भी पैसे लगेंगे। तो सवाल राइट। ये है, हाइपोथिकेशन के लिए कुछ नहीं है आपके पास, राइट? सिवाय इसके कि यू हैव टू बिलीव ऑन द फार्मर और मे बी सम काउंटर गारंटीज फ्रॉम द रिलेटिव्स और द फ्रेंड्स। इसके अलावा आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं। सो ये जो मसला है ना, इसको हल करने की जरूरत है। Here lies the role of financial institutions as well as the government, Yes, right? So the right. mixture of the two can So be taken up. right now, as a Rivulis, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, we have signed an agreement in one of the NBFCs, one of the sugar mills, to do a trial for this model कि बॉस, फार्मर को हम 80% फंडिंग करेंगे, 20% अपफ्रंट पेमेंट करेगा, 80% विल बी फंडेड बाय द एनबीएफसी, विच विल बी रिकवर्ड एट द क्रॉप साइकिल। Because if we are उसकी using this mill, then certainly it is possible. with the mill, that's why the mill where he brings the cane, so mill Right. can always recover the installment amount and pay back to the फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, Yes. राइट? अब इसके अंदर क्योंकि एनबीएफसी में जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो बहुत ज्यादा है, महंगा है, right. तो हाफ ऑफ द इंटरेस्ट जो सबवेंशन है वो रिवोलिस कर रही है, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम where the somebody should come forward and start funding to the farmers for the adoption of the better technology. Right. So this is right now going on in Maharashtra. We are trying to move to the Uttar Pradesh also in sugarcane, and hopefully we will start adopting other crops as well by the help of others. So that's where it is. So funding of the system and the financing of the system is very, very important, which should be linked to the crop cycle, not to the monthly installments, and that too without any collateral, because here you don't have any collateral. Right. So in a way, collateral will be only the crop only, which comes Yeah. after every 1 year or 6 months, whatever time. So whatever it is, but most of the farmers will adopt when it is easily available to them. This is the first major reason which you feel that is it is not being converted. Right. So, sir, as far as my question was about Punjab specifically, as Punjab being one of the highest money-making area as far as agriculture is concerned, so even then farmers are not adopting. People's perception is like that they are making more money out of agriculture, and they also know this thing कि ये जो पानी है वो ज़्यादा यूज हो रहा है और नीचे से पानी जो है कम डिप्लीट हो रहा है, पूरी यूनिवर्सिटी सारी उस पर लगी हुई है, गवर्नमेंट भी वो बात कर रही है और फार्मर को भी वो बात पता है, और हर मंच पे, हर फार्मर की एसोसिएशन पे, हर फार्मर की ऑर्गेनाइजेशंस पे ये बात हमेशा होती है। आज से नहीं देख रहे हम, मतलब पिछले मेरे ख्याल से मैं तो 20 साल से ही देख रहा हूँ कि एवरी टाइम एवरीबडी इज स्पीकिंग अबाउट सेविंग वाटर, रिड्यूसिंग, हमारा वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, तो उस पे कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपको ना स्टार्ट जो करना पड़ेगा वो उन क्रॉप से करना पड़ेगा जहां पे इजिली एडॉप्शन है।
like quinoa. Right. So the adoption has already started in quinoa. I am not saying that, but it can be escalated. हम It अगर can be escalated. Right. अगर आप राइस को पहले टारगेट करेंगे, सो वो आई नहीं थिंक चलेगा. वी आर मूविंग इनटू द राइट, नॉट अ राइट डायरेक्शन. क्योंकि पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऐसी हैं. अगर राइस में भी मेरे को माइक्रो इरिगेशन करना है, तो पहले तो ट्रांसप्लांटेड राइस से डायरेक्ट सीडेड राइस में मूव करना पड़ेगा. DSR. अगर आपने ट्रांसप्लांटिंग में 6 इंच पानी भर के रख ही दिया, तो फिर सारा पर्पस पहले 6 दिन में ही फॉरफिट हो जाता है, Fail हो खत्म हो गया. जाती है. Right. सो पहले, so let's move into that direction. नहीं, But changing the crop pattern can also be done. Actually, that is yeah, not a big deal. Right. I so, got it. so if you really want to move from overutilization or over extraction of the groundwater to micro irrigation system, you need to create an ecosystem as a whole. आज वो राइस इसलिए ग्रो करता है कि मार्केट एक्सेसिबल है, गवर्नमेंट का एमएसपी सपोर्ट है, और वो उसको खेती करना आता है. आज Right. आप वहां के किसान को ये बोलो कि तुम अंगूर उगाना शुरू कर दो, पोमोग्रेनेट उगाना शुरू कर दो, या वेजिटेबल की खेती शुरू कर दो. पहले Yeah, टाइम तो Angur, but India mein Angur was a big crop, but failed because of this reason only. Na? so Because there market has to नहीं be, हुई उसकी. so marketing is an important aspect. And then what I was talking about, the ecosystem. Right, right. If some farmer adopts technology and adopts the drip irrigation system, it's not the maintenance free system. Is so if it is not a maintenance free system, somebody will have to, if something goes wrong, somebody will have to go and repair that. Yes. Cost charge. तो अब ऐसा है कि अगर मेरे पास वो क्लस्टर नहीं है 200-300 हेक्टेयर का, तो मेरे आदमी की जाने की कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है, पहली चीज. और दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन पावर, ट्रेन्ड मैन पावर. सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, और ये एक साथ बनेगा और क्लस्टर्स में बनेगा, आइसोलेशन में नहीं बन सकता. Right, right. And So at we least need one or two crops should be converted. Slowly the other crops can be converted. 1 and 2 crop in the cluster. Say Yes. if we want to do the Muksa, say Kinu, so from Muksa Right. to Abho, we need to create a cluster so that we Right. have a dealer network, repair network, availability of the parts, and then availability of the experts to train them how to do that. After 4-5 years, the farmer become expert. No issues on So that. Then they can take care of that. Can all the micro irrigation companies cannot come together to create such an ecosystem, because that will be easier for you guys in a way. We are doing it. We are doing it. Okay. I'm not saying that we as an irrigation association or irrigation companies are not coming together and not doing it. That's why you are seeing a lot of adoption happening in Haryana, the neighboring Very state. Yes. You will see the lot of adoption happening in North Rajasthan. You talk of Ganganagar, you Okay. talk about from Ganganagar to Jodhpur. You will see you will see a lot of adoption happening, particularly in the crop which are high value crops. Right. So and now the Rajasthan is moving toward that ecosystem. Very good. Unfortunately, maybe the Punjab is not in that same league, but hopefully another 5-7 years, It will come you under. will see that. It will be an induction effect, probably, where the farmer can see and go and see the crop happening in neighboring Rajasthan and not happening in Abhor or Fazilka. So that's how it is. So it will be like an infection moving Yes. inside of Punjab in the coming days. Okay, sir. Good morning, Sudhanshu ji. Thank you for joining. So Sudhanshu Srivastava want to ask, how is the adoption of micro irrigation by farmers in UP? The farmers in UP, it is in nascent stages, but now the government support is there, and the UP has formed a new initiative which is called UP Uttar Pradesh Micro Irrigation Project, which they have launched that portal last month, and August was the first month for UP Micro Irrigation Project, which is under the Department of Horticulture. So, and
Lot of focus is from the UP government. A lot of budgetary support is available from the Uttar Pradesh government. So I'm quite hopeful that UP is the next, going to be the next big adoption state in coming years. Right now, the adoption is around in 50,000 hectares happening every year. Out of that, around 40,000 hectares happens in sprinkler system, 10,000, 20,000 hectares happens in the drip irrigation system. But with this new project, which is a very, very focused on the micro irrigation, I think that you will see accelerated growth in Uttar Pradesh. So there is one more question. How do you convince farmers to adopt drip in high water? So we have already discussed about it a lot. I think, Sudhanshuji, we No, have already discussed about it. it is a question of, it is not only the question of water availability. It's the question of an infrastructure where you can provide a fertigation. Even the water is available, I'm okay with that. Water is still requires. But if you want to fertigate, you want to save on fertilizers, you need a infrastructure of the micro irrigation. Fertilizers as well as the labor as well, no? Because there is no need of much labor also required. Fertilizer, labor, lesser herbicide, lesser weed pressure. So you need to have an infrastructure of drip irrigation system into the field to adopt that. So Jaiswal Sahab, there is one more question which I would like to ask, which will be very useful for all of the industry peers and juniors who are in the industry. तो ये सवाल ये है कि आप आज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसकी क्या टिप्स और टेक्निक्स हैं वो आप थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएं ताकि हम आने वाले समय में और भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओज अपनी जूनियर्स को देख पाए. बहुत खास तरीका कोई नहीं है, but start believing in yourself. Because as a ground level worker, when you start your career as a sales representative or the sales officer or the area manager, you are the touch point between the customer and the company. Right? You are the first person who understands the requirement of the customer before it escalates upwards. So agar you have a better understanding of your customer and you have some firm beliefs, please be open to your management. Start putting your viewpoints in the meetings with your say colleagues, in your seniors, in decision making, and start believing in yourself. Start working towards that, and don't be afraid of accepting the new challenges. To be very honest with you, if someone in all the companies there is a group of people who are identified and the companies really want to grow them and groom them to the next level. But if someone is transferring you from sales to marketing or the marketing to supply chain or supply chain to the logistics or logistics to the administration or one geography to the other geography, don't take it as a punishment. Sometimes is a part of your grooming. So that when you take a next level, at least you have an experience of 2 or 3 departments, 2 or 3 geographies. When you are taking to the next level, you have a better understanding of different department, different geographies, different intercultural competencies. And so please start accepting that as your grooming up process rather than is a punishment posting. Otherwise, the same group of people, those who are liking you, maybe 10 years down the line, 15 years down the line, they will start asking, you have only worked in one geography, you have only worked in one department. How do I promote you to the next level? So please take it as a challenge, and believe me, you will start relishing it. And I would like to add here, India as a country is a very beautiful country, and you should see whole of it. And yes, and it is so diverse, so beautiful, and so interesting to see all parts of the country, and you learn so many things from different cultures, different ways of life.
and different languages. And one So more part I want to know, Jaiswal Saab, although it is a very known fact, but what kind of courses do you recommend during the career, which people should do in order to raise them to the next level? look, if you are the moment you are growing up, no, fine, enough. The technology is changing. You must keep a pace with the technology, and technology is changing at a much faster pace than we expect. Mm, If you are not changing with the time, so you will be lagging behind in the technology. So please keep you updated what is happening in the field of your field, like new molecules coming up, new technology coming up, pesticide, biostimulants coming up. What are the regulation around them? You must be aware of all that. Similarly, the moment you started growing up, your understanding of the finance and HR, these are the two areas is very important. I don't want you to become chartered accountant, but you must understand and start learning the basics of the finances, like how to read a balance sheet, mm. what in inferences can you draw when you are seeing a balance sheet, right? And basic HR related issue, how a human behavior happens, how to take care of that. So, but if you are keeping pace with the technology and upgrading yourself, I'm pretty sure there is no stopping. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर फैंटास्टिक टिप्स. सो गाइस, हमने तो कौशल साहब, जायसवाल साहब से जो भी निकाल सकते हैं हम कोशिश की है हमने, कि यहाँ तक की कोशिश की है कि ये एमडी लेवल पे हैं तो आप लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं. तो आई बिलीव ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस, एंड thank you sir for coming over the show, and I would thank everybody for whoever have joined or whoever will be watching this after some time as well, because this show will be available on YouTube forever now. Thank you, sir. Thank you, Puri Saab. Thank you for having me here, and thank you, friends, for listening patiently. Thank you very much.